So, hello बच्चों. Here we are going to discuss the DSET examination of physics, and we are discussing the paper set A. So, this is question number 1. यहाँ पे पूछा गया है कि what is the value of current? If we are going to see the formula, V equals to IR. So, I will be equals to V by R. But यहाँ पे हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा. तो यदि हम देखें यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है and we have a battery here. So this 60 ohm, this is also 60 ohm, and this is also 60 ohm. When we see these two resistance will be in series. So I am going to draw the diagram again. Here we are having the 2 volt battery and this 60 ohm, and the resultant resistance will be equals to 60 plus 60, that will be equals to 120 ohms. Now these two resistance will be in parallel. So what will be the R equivalent here? The formula 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2. We are going to see the equivalent resistance. So this will be 1 by 60 plus 1 by 20. When we take LCM, this will be going to be 2 plus 1, that is 3 divided by 120. So this will be 1 divided by 40. So R equivalent will be equals to 40 ohm. Now, 2 volt battery connected to the 40 ohm resistance, formula will be same. I equals to V by R. V is 2 volt and R is 40 volt. 1 divided by 20, that will be equals to 0.05 amperes. So option 4 will be correct. Here in question number 2, we are discussing about the higher potential element and lower potential conductor. So current will always flow from higher potential lower potential. This will be the current direction. Higher potential to lower potential. We conventionally we know that the electron will flow in opposite of current direction. So electron will flow in this direction from lower potential to higher potential. Here they have represented current as X and electron flow as Y. If we see the option number 1, X represents the electric current and Y represents the flow of electrons. So option 1 will be correct option. This question number 3, we know all. We have 4 directions. This one is north, south, east, and west. And it is saying that a positively charged particle, alpha particle, is moving towards west. एक पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है और वो किधर की ओर जा रहा है? वेस्ट की तरफ चल रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी किधर की ओर है? वेस्ट की तरफ है. और ये डिफ्लेक्ट हो रहा है नॉर्थ में. नॉर्थ में डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है? इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा नॉर्थ की डायरेक्शन में. So it is asking that what is the direction of magnetic field? So magnetic field का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? हमने अभी देखा if current is flowing in this direction,
then electron is flowing opposite to that. That means the flow of positive charge particles like proton represent the direction of current. So the flow of positive charge particle represent the direction of current. तो यहाँ पर हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और वो जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में. दैट मीन्स वी कैन से दैट direction of current is also in the west direction. And by using the Fleming's left hand rule, we can see here the current direction is west and force in thumb direction, that is in the north direction. So the this finger, index finger is showing upwards. That means the magnetic field direction will be upside. So then the positive charge will deflect in north direction. So using Fleming's left hand rule, we will find Fleming's left hand rule. We can find the direction of magnetic field that will be upwards. Now coming to the question number 4, using the right hand rule, the protons are going around the circle. That means if proton, यानी कि positive charge going anti-clockwise direction, that is the direction of current flows. Current is flowing in anti-clockwise direction. Using right hand rule, if we curl our fingers in the current direction, then the direction of thumb will represent the direction of magnetic field. It is going like out of the page. You can see here, it is going out of the page into the inside the circle. It is out of the page. It can be represented by this. So option number 2 will be correct. Now question number 5 from the mirror. So we have a concave mirror, and the concave mirror you can see like this. And this is principal. And it is saying that it is producing 2 times magnified images. That means object must be placed. You know this is pole, and then we have focus, then we have center of curvature, and we have some distance infinity. So if object is placed between C and F, then we get a magnified image. A real object get a magnified image in between C and infinity. So the magnification here they have given is how much times? 2 times magnified. And you know the magnification formula for mirror is minus V upon U. This will be the magnification formula for mirror, minus V upon U. And the main thing is like they are saying that 2 times of magnified. So we have to put here plus 2 or minus 2. So we also know magnification equals to the height of image divided by height of object. And we know the sign convention. Upside the principal axis we take positive and downside we take negative. So this one is negative and this one is positive in our case. You can say the image is downwards and our object is upwards. So this is coming negative. That means we must put the value of magnification is minus. So when we cut this value, we get V equals to 2 times of U. And what is the value of U here? The object is placed in front of concave mirror. Then U will be equal to minus 10 centimeter. So from here we can calculate V equals to 2 times of minus 10, that will be minus 20 centimeters. So option number 1 will be correct in this case. Now, this is from reflection of light. We have 2 mediums, medium B and medium A. You must know this normal incident angle I. This is refractive index mu1, and then this is refractive index mu2 and refracting angle R. So what is the Snell's law? Mu1 sin I equals to mu2 sin R. इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इंसिडेंट लाइट है वो कौन सी है? मीडियम बी से आ रही है.
और वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री. दैट मीन्स वी हैव आई एंगल आई विद इक्वल्स टू 60 डिग्री और नॉर्मल के साथ वो कितने से रिफ्लेक्ट होके जा रही है 45 डिग्री. So angle R will be equals to the 45 degree. If we put our values here, mu1 is medium 1, medium B. So medium B का refractive index sin 60 degree equals to medium A का refractive index that will be mu A and this is sin R that is sin 45. It is given already. These things are given in the figure. अब हमें पूछा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए. दैट मींस दे आर आस्किंग म्यू बी अपॉन म्यू ए और इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए म्यू बी अपॉन म्यू ए. सो व्हाट यू विल फाइंड हियर म्यू बी अपॉन म्यू ए दैट विल बी sin 45 डिवाइड बाय sin 60. From this equation you can find this mu v upon mu a. You take mu a on this side and sin 60 on this side. So sin 45 is 1 by root 2 and sin 60 is root 3 divided by 2. When we solve, you get root 2 divided by 3. So your answer will be option number 3. Okay. This is from the length. So it is saying that you already know lengths are of two types, either concave or convex. This is convex and this is concave. इसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव और इसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव. यहाँ पे बता नहीं रखा है कि किसके सामने रखा है. सो हम किसी के भी सामने रख सकते हैं लेकिन फोकल लेंथ विल डिराइव कि कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है. यदि फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा वी विल हैव पॉजिटिव focal length, then we have convex. If we have focal length negative, then we can say that it is having concave lens. तो कोई भी एक लेंथ है जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है म्यू की वैल्यू कितनी होगी -5 सेंटीमीटर और पीछे बन रहा है इमेज लेंस की दूसरी साइड में यानी कि v की वैल्यू +15 सेंटीमीटर होगी. ध्यान देना साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. साइन कन्वेंशन के लिए बस इतना समझ लो, मान लो एक लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट इधर से आ रही है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मान लो वो रखा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और मेरा इमेज इस साइड में बन रहा है तो v पॉजिटिव हो जाएगा. लाइट की डायरेक्शन में जो भी लेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ऑप्टिकल सेंटर से चलेंगे तो नेगेटिव. So from the sign convention we can write u equals to -5 and distance of image from the optical center is +15 centimeter. It is saying what kind of length it is. So for the long formula for this 1 upon f equals to d1 upon b minus 1 upon e. 1 upon f equals to d v की वैल्यू कितनी है +15 minus of 1 upon u की वैल्यू कितनी है -5. So this will become 1 by 15 plus 1 by 5. When we take LCM 15 1 plus 3 that will be 4 upon 15. So we reciprocate it, you get total length will equal to 15 divided by 4 and 15 divided by 4 is like 3.75 centimeter and it is coming positive. What positive sign means? This is a convex lens. So option number 3 will be correct. Here we are having a question from gravitational field intensity. Like here we have Earth and somewhere we have Moon. So for Earth, the gravitational field at the surface intensity, gravitational field intensity at the surface or acceleration due to the gravity at surface is g, and for Moon we know it is g by 6. बाकी इसका फॉर्मूला क्यों ये g से g by 6 हुआ we will read it later in class 11. So एक पर्सन है जिसका मून पे वेट है 9 न्यूटन, यहाँ पे है वो 9 न्यूटन. पूछा है कि यहाँ पे उसका वेट कितना होगा, कितना न्यूटन. वी नो ऑलरेडी वेट इक्वल्स टू द मास इनटू जी. ठीक है, तो मून की बात कर लेते हैं. मून पे वेट मान लेते हैं W है, दैट विल बी 9 न्यूटन. मास है
और जी की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, जी बाई 6। सो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 केजीज, 54 केजीज। So if the mass m is there, so what will be weight on earth, mg, mg, and here we when we calculate mg, so we have 9 into 6, that will be 54 Newton. So मेरा वेट जो अर्थ पे दिखेगा वो कितना दिखेगा, 54 न्यूटन, और मून पे कितना दिखेगा, 9 न्यूटन। ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है जिससे वो खींच रहा है वो यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू मून, और कितना टाइम्स ज्यादा है, 6 टाइम्स ज्यादा है, इसीलिए जो वेट होगा वो भी 6 टाइम्स होगा। यहाँ पे 9 न्यूटन है तो दैट विल बी 54 न्यूटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 रिलेटेड टू द हीट टॉपिक। कितना एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी क्यों इक्वल्स टू कितना चाहिए मेरे को, सबको फॉर्मूला पता होता है, mc डेल्टा टी, सबने पढ़ा होगा। एम इज द मास, टी इज द कितना हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, मतलब 1 केजी वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने के लिए मेरे को कितनी कैलोरी चाहिए, 8 किलो कैलोरी चाहिए। तो कितना मास है अभी मेरे पास, 5 केजी। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, और कितना टेम्परेचर चेंज किया मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया है कहाँ पे, 20 से, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 80, दिस विल 5 into kg, that will be 400 किलो कैलोरी। सो 400 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर 4 will be correct, 400 किलो कैलोरी will be the answer of this question. Now question number 10, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है कि एक पर्सन है जो कि 4 मीटर के आगे देख ही नहीं पाता है, तो उसको क्या लगाना चाहिए, 4 मीटर के आगे नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि जब हम दूर की चीजों को नहीं देख पाते हैं तो भी है मायोपिया। ओके, वी हैव मायोपिया, और मायोपिया के केस में हम लोग यूज करते हैं कॉन्केव लेंस, और कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कितना होता है, नेगेटिव, ये तो मेरे को पता चला। और पावर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/f से, और यहाँ पे 1/, फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 4, ध्यान से रखना है, यहाँ पे -4 रखना पड़ेगा क्योंकि कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, तो ये कितना आएगा, 0.25। अब जब भी फोकल लेंथ को मीटर में रखते हैं यहाँ पे, तो आंसर आता है हमारा डायोमीटर, 0.25 diameter with minus sign. So your answer will be 2. Thank you very much. This is all about the solutions of circuit physics.